Hello, good morning, my dear students. Welcome back to your mathematics class once again. How are you all? I hope you all will be fine and safe at your home and you all are doing well. So, my dear students, today we will study properties of multiplication. Okay? So, before starting today's topic, we will see the solution of previous homework. Okay, so in a previous homework I had given you to solve remaining question of question number 3 and 4. Okay, so in question number 3 we had already solved first and second, and we have to solve third. So we can see it has been written in addition form and we have to write it in group and multiplication form. Okay, so firstly we will count it 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So we can see here 8 nines. So we will write here 8 nines. Okay, and in multiplication form we will write as 9 multiplied by 8, because 9 tell us how many group and 8 tell us how many in each group. Okay, so we will write it 9 multiplied by 8. In question number 4 we had done A and B and we have to solve C, D, E, F. So in C, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, it means 5 times. Okay, so we will match it with first, it means 5 multiplied by 3. Okay, because we can write 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 means 5 times as 5 multiplied by 3 in multiplication form. Okay, next is 6 plus 6 plus 6, it means 6 multiplied by 3, yeah, or 3 multiplied by 6. So we will match it with 6 number, 3 multiplied by 6. Okay, in E, 3 plus 3, it means 3 multiplied by 2. So we will match it with 4th number. And in last, 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, it means we have to add 2 5 times. So we can write as 2 multiplied by 5 or 5 multiplied by 2. Okay, so we will match it with 5th number. Here 5 multiplied by 2. So I hope you all have done your homework. So now you have to match your answer with this solution. Okay, so now I am going to start our today's topic. So let us see. Today we will study properties of multiplication, and by using multiplication's properties we will solve exercise 5th B. Okay, so let us see properties of multiplication. First property of multiplication is commutative property of multiplication. Commutative means क्रम विनिमय, means order changing. So changing the order of two factors does not change the product. Means in multiplication, when we change the order of two factors, does not change the product. मीन्स कि अगर दो नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं और हम उनके ऑर्डर को चेंज करते हैं, मतलब फर्स्ट की जगह सेकंड पे और सेकंड की जगह फर्स्ट को रख कर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी हमें आंसर सेम ही मिलेगा.
So we will understand it by a example. So different ways of arranging and thinking about 12 dots are shown below. You can see here, first way to see, 3 groups, first, second and third. It means 3 groups, and in each group 1, 2, 3, 4. In each group 4 dots. Okay, so we will write as 3 groups and 4 in each group. So 3 multiplied by 4. 3 multiplied by 4, and when we will multiply 3 with 4, we get 12 as a answer. We get 12. We get 12 as a product. Okay, and another way to see 12 dots, you can see it like this: 1, 2, 3, 4. 4 groups. Okay, and 1, 2, 3. 3 dot in each groups. So we can write it in multiplication form: 4 groups and 3 in each group. So 4 multiplied by 3, and we get 12. 4 multiplied by 3 is equal to 12. Hence, from the above, we observe that changing the order of 2 factors, does not change the product. So the above property is called the commutative property of multiplication. It means to say कि अगर हम नंबर के ऑर्डर्स को चेंज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट में क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, सो वी गेट 12. अगर हमने 3 में 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 12 मिला. और अगर हम इनके ऑर्डर को चेंज कर दें, मतलब जो सेकेंड नंबर पे है उसको फर्स्ट नंबर पे, और जो फर्स्ट नंबर पे है उसको सेकेंड नंबर पे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करें, सो तब भी हमें क्या मिला, 12. सो इन बोथ केस वी गेट सेम आंसर. दोनों ही में हमने सेम आंसर मिला 12. दोनों में ही, चाहे हमने 3 मल्टीप्लाई बाई 4 किया या 4 मल्टीप्लाई बाई 3 किया, तो हमें आंसर क्या मिलता है, सेम आंसर 12. सो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. यह मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, या हम जिसे क्रम विनिमय नियम बोल सकते हैं. ओके, so I hope you have understood what is the commutative property of multiplication. It means changing the order of 2 factors does not change the product. Means कि अगर हम नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, नंबर के ऑर्डर को चेंज करने पे भी जो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है, जो प्रोडक्ट मीन्स आंसर, जो प्रोडक्ट आता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो ऑलवेज सेम होता है. ओके, सो second property of multiplication is multiplying with 1. Any number multiplied by 1 equals that number. Any number multiplied by 1 equals that number. Means कि हम अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा वो नंबर ही मिलता है. As you can see, 3 multiplied by 1 is equal to 3. 3 multiplied by 1 is equal to 3. Similarly, when we multiply 10 with 1, so we get same, means we get number, so 10. Okay, and when we multiply 1 with any number, so in that case we get that number. It means 1 multiplied by 7 is equal to 7. मीन्स कि अगर हम 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें वो सेम नंबर ही मिलेगा, या किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें वो नंबर ही मिलेगा. ओके, थर्ड इज मल्टीप्लाइंग विथ
0. Any number multiplied by 0 equals 0. It means when we multiply any number with 0, we get 0 as a product. मीन्स कि अगर हम किसी नंबर में 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर में 0 ही मिलेगा. या यू कैन सी 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0. ओके, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें 0 मिलेगा, और अगर हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी हमें आंसर में 0 ही मिलेगा. ओके, सो दिस इज 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन means changing the order of 2 factors does not change the product. Okay, second is multiplying with 1. Any number multiplied by 1 equals that number. And third property is multiplying with 0 means any number multiplied by 0 equals 0. Okay, so I hope you all have understood all these properties of multiplication, and now we will solve by using these properties exercise 5th B. Okay, so let us solve. Question number first of exercise 5th B is multiply the following mentally. Means we have to solve this question mentally. Okay, so first is 2 multiplied by 4. So if you have remember multiplication tables from 2 to 10, so you can solve these question very easily. Okay, so first is 2 multiplied by 4. It means 2 4s are, tell me, yes, 2 4s are 8. So 2 multiplied by 4 is equal to 8. Okay, next B, 4 multiplied by 9. So tell me, 4 9s are, yes, 4 9s are 36. So 4 multiplied by 9 is equal to 36. Okay, next we will solve H, 9 multiplied by 0. So my dear students, tell me, 9 multiplied by 0. We have just studied about multiplying with 0. Means when we multiply any number with 0, we get 0. So 9 multiplied by 0 is equal to 0. Okay. Next we will solve M, 1 multiplied by 9. So we know when we multiply 1 with any number we get that number. So यदि जब हम किसी नंबर में 1 से या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर ही आंसर में मिलता है. ओके, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 9. Next Q, 0 multiply by 1. So we know when we multiply 1 with any number including 0, we get 0. मीन्स कि अगर हम 0 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 0. फिर चाहे उसको हम 1 से ही मल्टीप्लाई क्यों ना कर रहे हों. सो 0 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 0. ओके, एंड नाउ remaining question of question 1 you have to solve. Okay, let us look question number 2. Write the missing factors in the space provided.
मीन्स कि जो ब्लैंक्स हैं उसमें हमें मिसिंग फैक्टर को राइट करना है. सो फर्स्ट इज you can see here it has been written 6. 7 multiplied by 6 is equal to 42. मीन्स कि अगर हमें इस नंबर हमें ये सॉल्व करना होता तो यहाँ पे ये 6 ना दिया गया था. ठीक है, तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना था जिसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें प्रोडक्ट 42 मिल जाए. सो हियर इज 6. मीन्स जब हम 7 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर में क्या मिलता है 42. ओके, नेक्स्ट इज 8 मल्टीप्लाई बाई डैश ब्लैंक इज इक्वल टू 48. मीन्स वी हैव टू फाइंड नंबर बाय विच we multiply 8, so we get in answer 48. Okay, if you have remember table of multiplication table of 8, so you can easily solve this question. So in table of 8 we know 8 6 are 48, so here will be 6. When we multiply 8 with 6 we get 48 in answer. Okay, next is 3 multiply by blank dash is equal to 15. So here will be 5. 3 5s are 15, or when we multiply 3 with 5, so we get 15 in answer. Okay, D, we have to find number by which when we multiply 4 we get 0 in answer. So we know that when we multiply 0 with any number we get 0 in answer. So here will be 0. यानी कि जब हम 4 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें आंसर में 0 मिलेगा. ओके, सो आई होप you all have understood question number first and second, and now this is your homework time, and your homework is you have to solve remaining question of question number first and second. Okay.